So today we are going to have some live market session, and we will try to see whatever we have done, do those things work in the real markets. Yeah. So just a quick understanding about whatever we have learned and how it works. ये main, यहाँ पे इसका आता है ना? Yeah. Okay. Am I properly audible and can you see me clearly? Everybody? Okay. Cool. So from whatever we have learned till now, anybody has any particular question that you want me to address? If yes, please write it, okay, and we will try to solve it in the best way we can. Right? So let's look at the current market scenario. Yeah. And this is the 5-minute chart, if you can see it. Okay, this is a 5-minute chart and it has been in the bearish zone for a long time now. Okay, yesterday was a bearish note. We ended on a bearish note. Today, again, we are continuing with that. So yesterday in the last 20 minutes, we had seen this upward rally, but today somehow this rally could not continue. Okay, now let's see what it shows if we change this to Heikin Ashi. Okay, in the Heikin Ashi chart, now if you look at this, see Heikin Ashi, I told you this is not a 5-minute wala indicator. Okay, this is actually a weekly indicator, but we are just looking at it from a perspective. So this is your weekly candles, okay, and as long as it is in the green, you should be in the green. Correct? If it turns to red, we will book the loss and we will turn to red. Okay. We are not going to be stubborn in our view. That is the first important thing of a trader. Okay, you cannot be stubborn, you cannot fight with the market saying कि नहीं मैंने सुबह देखा था कि आपका मूड यही था, अब आप दोपहर को कैसे चेंज कर सकते हो? नहीं, वो वापस चेंज होगा, ऐसा नहीं होता. Okay, you cannot fight with the market. You just need to accept wherever it is going, and short term में वो आपको नचाएगा. Okay, short नचाएगा. Period. नाचने के लिए तैयार रह जाओ. If you want to get into short-term trading, markets are going to make you dance because that is the characteristic of the market. मार्केट एक जगह पे मूव नहीं होता, ना तो वो प्रेडिक्टेबल होता है. ओके, सो यस, आप उसका मूड समझ सकते हो, बट ज्यादा उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हो कि यू हैव टू ओबे मी. कैन नॉट, इट विल नॉट. सो ये है आपका वीकली चार्ट. इफ यू वांट यू कैन सिंपली मूव टू द डेली चार्ट. ओके, दिस इज द डेली चार्ट एंड सी यहाँ पे व्हाट हैज हैपेंड इज, as I had been showing you all for a long time, that the market, okay, has touched this lower band and is now on the upwards. Okay, this is obviously Heikin Ashi, but if I do it for the normal candles, it is still far away. Okay, so this Bollinger Band is still a bigger one, but in the Heikin Ashi it has touched. So in Heikin Ashi, Bollinger Band का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है. It is only in this actual market ये Bollinger Band का impact होता है. So now let's see अगर ये क्या करता है यहाँ से. If it goes further down or maybe यहाँ से touch करता है and then it goes back up, I am not very sure. Nobody is sure for that matter. But as long as it is, this band has narrowed down. Okay. Now, I have a feeling that it will consolidate for some time unless and until it tries to breach one or the other band. Okay? अगर यहाँ पे नीचे टच हो जाता है
या फिर यहाँ पे ऊपर टच हो जाता है तो कुछ मूवमेंट आ सकता है कोई भी दिशा में, बिकॉज बोलिंजर बैंड डज नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, बट इट विल टेल यू दैट नाउ इट इज रेडी फॉर अ बिग मूव ऑन आइदर साइड। तब तक ये जो है वो मार्केट इस एवरेज के आसपास घूमते रहेगा, ऐसा बोलिंजर बैंड हमको बोलता है। क्या होगा एक्चुअली में वो तो हमें टाइम ही दिखाएगा, बट यू दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ये आपको वोलाटिलिटी के बारे में बताता है। ओके, बाकी तो हजार इंडिकेटर्स होंगे जो आपको क्या करना है क्या नहीं वो बताएंगे, राइट? देयर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट individual indicators. We are talking about the one that is important from the options point of view. So options के point of view से this particular thing called the Bollinger Band, it shows you the standard deviation. So this is the moving average and this is the standard deviation. अब मैंने वो standard deviation को multiply by 2.33 कर दिया है, and that gives me 95% confidence level के, you know, that is a statistical term. So आप कोई भी theory of hypothesis पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Okay, based on that we use this kind of an indicator, simple है। Okay, ये आपका mid line जो है वो moving average है और ये आपका standard deviation है। अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगा तो आपका ये बैंड बढ़ जाएगा, अगर ये मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो ये बैंड छोटा हो जाएगा। ओके, सो जब तक ये वापस इसको ब्रीच नहीं करता, यहाँ पे देखो इसको टच किया, ओके, ये बैंड छोटा हो रहा था, इसको जैसे ही टच किया तो या तो ऊपर या नीचे, आई डोंट नो विच वे। ओके, दिस बोलिंजर बैंड डज नॉट टेल यू द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, it just tells you that the band now wants to increase in size. Okay, and that is what it has done, correct? So आगे भी यहाँ पे भी now we are seeing that this band has been narrowing, and now let's see कि वो कब either on the lower side or higher side, जब तक वो टच नहीं करता तब तक I am going to be in the consolidation phase. ओके, ये मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन और आ सकता है एट दिस लेवल। लेट्स सी क्या होता है। ओके, दिस इज हाउ आई टेक अ व्यू, एंड नाउ इफ आई हैव टू टेक अ व्यू बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ अ लॉजिक, आई हैव टू सेल ऑप्शंस, राइट? आई हैव टू सेल ऑप्शंस, क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है कि इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। सो शॉर्ट ट्रायंगल, योर बेसिक लवली फेवरेट स्ट्रेटजी। ओके, ये हम यहाँ पे अगर डिप्लॉय करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू से इज कि हम यहाँ से so I will sell somewhere around here, okay, let's say 19400 का put मैं बेच दूंगा, and this is somewhere around 20,000, okay, तो 20,000 या 20,050 का मैं कॉल बेच दूंगा, करेक्ट? So 19,400 and 20,000 ka I will be selling options. Okay. Now, when I look at this, so 19,400 ka put for this month, for this week, sorry, is 25 rupees. Okay. 25 rupees में ये 19,400 का पुट बेच सकता हूँ, एंड 20,000 का कॉल ऑलमोस्ट 10 रुपीज में मैं बेच सकता हूँ। ओके, सो दिस वुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी, तो मैं अभी कर सकता हूँ। ओके, स्ट्रैंगल इज सेलिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, I could not understand that. In this, it is difficult. I will try to do it over here. Yeah.
So now can you see 19400 ka call, sorry, 19400 ka put is trading at 25 rupees, okay, and 20,000 ka call इसके अंदर दिखेगा नहीं. It's somewhere over there, okay, 19,900, so 20,000 का call is to 2000 10 rupees के आसपास था, okay. So that is how we can create a strategy. Now please pay attention as to अगर wrong गए तो क्या, short strangle कर दिया, and then if you go wrong तो क्या होगा? What do you mean by going wrong? When you say you are going wrong, तो क्या करते हो आप basically? Where it went? Yeah. So basically आप ये ट्राई कर रहे हो कि इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, करेक्ट? लेकिन अगर रॉन्ग गए तो क्या होगा? उसका मतलब कि अगर ये इधर टच किया या फिर ऊपर टच किया तो क्या होगा? That is going to be a problem. So in that case, what we need is to hedge this. Now you can hedge it in different ways. Okay. Now what are the different ways? Let's understand. And each of these ways is up to you. Okay. आपके मेन व्यू के ऊपर डिपेंडेंट है. सो लेट से आप इधर इसके लेट से 5 लॉट्स बेचते हो. ओके, सो आई एम सेइंग जस्ट 5 शेयर्स. ओके, लॉट्स आप मल्टीप्लाई कर लेना इनटू 10, सॉरी इनटू 25 रुपीस. ओके, तो इसके सामने आपको बाय क्या करना चाहिए? If you look at the 20,000 का call, नहीं, 19,400 का call is 25 rupees. But if you look at the 19,600 का call, it is 83 rupees. Okay. तो मैंने क्या किया, इसका रेशियो स्प्रेड में कर सकता हूँ, करेक्ट? सो 19,400 का, सॉरी नॉट दिस साइड, 19,400 का put I am selling at 25 rupees. Correct? Let's say I am selling 10 lots. आपको 250 मिल गया, right? 19,600 का put is trading at 83. You can buy it, and you can buy how many? Into 3. So it will give you almost 249, right? So आपने इतना दिया और इतना ले लिया, correct? So this is the ratio spread that you can make if you are wanting to manage the risk. क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, okay, this will deteriorate faster. This will deteriorate slower, and therefore आपको कुछ ना कुछ मिलेगा. If the market remains here also, okay, तो भी आपको, जैसे मैंने बताया ना, एवरेज के आसपास ही घूमते रहेगा, तो भी this will deteriorate faster because of the Vega effect, and this will deteriorate slower because it will be still near the at the money. Therefore आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा. Okay. Now if you are hoping कि वो मार्केट नीचे जाएगा, तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये सिट कैन गो बट नॉट बिलो 19,400, राइट? ये हमारा व्यू है.
अगर 19400 के नीचे गया तो चुपचाप ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देने का, क्योंकि 19400 तक जाएगा तो ये 10 शेयर्स लॉस करेगा, लेकिन ये तीन कुछ ना कुछ कमाते रहेंगे. नाउ इफ दिस गोज ऑन अ वेडनेसडे, अगर वेडनेसडे को नीचे जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज तब तक इसने बहुत कुछ कमा लिया होगा. ओके, और इसमें प्रीमियम बहुत सारा गिर गया होगा. बट अगर वो वेडनेसडे तक नहीं और मंडे को ही जाता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके, सो दिस स्ट्रेटेजी इज सच कि आपने 3 बाय किया पुट, 10 पुट सेल कर दिया. ओके, this is called a ratio spread. Now every strategy will come with its own set of problems. Okay, कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगा जिसमें आपको हर जगह पे प्रॉफिट ही हो. ओके, सो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कहां पे मुझे लॉस होगा. So if you just want to understand this in the form of the delta gamma theta vega, so let's do it saying that इसका जो delta है gamma theta vega, so 19400 का जो 25 रुपीज का जो है उसका जो डेल्टा है दैट इज -0.18, लेकिन हमने ऑप्शन सेल किया है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. सो डेल्टा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 0.18. ओके, अब गामा गामा is 0.001 minus, because we have sold it, theta is 5.4 positive because you have sold it, and vega is 6.7. Okay, now you have to multiply this by 10 because आपने 10 lots बेचे हैं. Multiply by the number of shares, actually multiply by 500 करना चाहिए, but अभी के लिए मैं आपको खाली इतना दिखा रहा हूँ. Okay, let's multiply it by 500 only. So these are 10 lots. Okay, so when you multiply this, this will be positive 90, this will be 0.05, this would be 2,700 rupees positive, this would be minus 3,350. Okay, this will be 0.5. ओके, ये हो गया आपका नेट डेल्टा गामा थीटा वेगा ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड. अब हम करते हैं इसका ट्रेड. ओके, इसका डेल्टा $19,600 का -0.45, -0.45 इंटू 150. ओके, बिकॉज हमने 3 लॉट किए.
gamma is equal to 0.002 into 150 theta is equal to minus 7.8, vega is 10. Into 150 into 150. Okay. So 0.45 into 150 is minus 67.5. Gamma is 0.002 into 150 is positive 0.3. Vega is 7.8 into 150 is equal to minus 1170 theta, and vega is 10, मतलब positive 1500. Okay. I'll just show you कि मैंने क्या किया actually में. Okay. So whenever you create a strategy, so आपको individual options का आपको जो net delta gamma theta vega है वो देखना पड़ता है. Okay, for this trade, these are the Greeks multiplied by the quantity that you have traded, which is 10 lots, तो 500 लिखा है. यहाँ पे आपने ये बाई किया है, 3 लॉट बाई किया है, तो इसका डेल्टा गामा थीटा वेगा लिख दिया और इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो अब मेरी जो नेट स्ट्रेटेजी का जो इम्पैक्ट है वो क्या है? सो माय नेट स्ट्रेटेजी का डेल्टा जो है यहाँ पे प्लस 90 है, वहां पे माइनस 67.5 है. सो इधर मेरा प्लस 22.5 is my delta. Correct? Positive. Gamma is यहाँ पे 0.5 माइनस था. ओके, और यहाँ पे 0.3 प्लस है, which means minus 0.2. ओके, जो थीटा है मेरा, नाउ इट इज, पहले इसका जो 1700 माइनस सॉरी 2700 प्लस है और यहाँ पे 1170 माइनस है. सो मेरा थीटा इज 1530 रुपया, राइट. एंड मेरा वेगा is minus 1850. Okay, now please pay attention to this. ये स्ट्रैटेजी मैंने जानबूझ के लिया है बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी. इसके अंदर आप देखोगे कि ट्रेड क्या किया है मैंने, 19600 के 3 लॉट्स मैंने बाई किए हैं और 19400 के 10 लॉट्स मैंने बेचे हैं. ओके, दोनों का प्रीमियम जो है वो सेम ही है. सो देयर इज नो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज अ सिंपल रेशियो स्प्रेड. ओके, अब इसका जब मैंने डेल्टा गामा थीटा वेगा लिखा, एंड इफ आई गेट अ डेल्टा विच इज पॉजिटिव, उसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट मार्क टू मार्केट दिखेगा. मार्केट अगर ऊपर गया फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, इफ इट गोज अप, you will get a mark to market profit based on this delta. This is not a bare put spread. Lot size अलग अलग है ना, quantity अलग अलग है. So every 1 point the market goes up, you will get 22.5 rupees. अगर 2 पॉइंट ऊपर गया तो आपको 45 रुपीज प्रॉफिट होगा.
3 पॉइंट ऊपर गया तो उस तरह से आपको नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि मार्केट कहां जाएगा. ओके, विथ योर गामा बीइंग माइनस, तो ये गामा माइनस क्या करता है, आपके अगेंस्ट में चलता है, लेकिन ये इतना बड़ा इम्पैक्टफुल भी नहीं है. ओके, सो ये 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये आपका जो डेल्टा है उसको कम कर देगा. ओके, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते रहेगा ये आपके डेल्टा को और कम 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 करते जाएगा. एंड दैट मीन्स कि ये जो पॉजिटिव है वो इतना भी पॉजिटिव नहीं रहेगा. ओके, क्योंकि अगर वन साइड ऊपर ही निकल गया तो ये डेल्टा आपको कुछ काम का ही नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली क्या होगा कि ये 249 जीरो हो जाएगा और ये T250 आपको मिल जाएगा, तो आपको क्या 1 रुपया ही प्रॉफिट होगा ना. तो अभी अगर आप सोचते हो कि आज का आज मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर लास्ट दिन को जाएगा तो आपको ये थीटा जो है वो काम करके दे देगा. योर थीटा इज पॉजिटिव, दैट मीन्स कि मार्केट अगर इधर रह भी गया या लास्ट दिन को नीचे गया तो आई एम गोइंग टू गेट माई प्रॉफिट. ओके, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी कॉल्ड रेशियो स्प्रेड. देखो ये रेशियो स्प्रेड है ना, सबके बस की बात नहीं है, बिकॉज इसमें आपका व्यू ही क्या होता है ना, आपको एंड तक याद समझ में ही नहीं आएगा. दिस अकॉर्डिंग टू डेल्टा इज अ बुलिश स्ट्रेटेजी.